अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वो हिदायत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास होंडा डिलक्स 125 है जिसका किक स्प्रिंग टूट चुका है, उसको हम तब्दील करेंगे। होंडा 125 या डिलक्स 125 का किक स्प्रिंग तब्दील करने के लिए हमें इंजन खोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह एक बात आपको बताना पड़ेगा कि किक स्प्रिंग का जो एक पुर्जा है वो इंजन के अंदर चला गया है, जिसकी वजह से रॉड को और पिस्टन को वगैरह सब कुछ को ख़तरा है ख़राब होने की। इसी वजह से हम इसको तब्दील करेंगे और इस तब्दील करने के लिए हमें पूरा इंजन खोलना है। आइए हमारे साथ रहे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए Baby